हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेमिंग निफ्टी। इस चैनल पर अभी हम एक ट्रेडिंग ऑटोमेशन की सीरीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस सीरीज़ के 7 एपिसोड्स ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं। लास्ट एपिसोड में हमने अपने ट्रेडिंग बॉट में स्लैक नोटिफिकेशंस कैसे इनेबल करने हैं या स्लैक को अपने ट्रेडिंग बॉट से कैसे इंटीग्रेट करना है, उसका सेटअप और पाइथन कोड समझा था। इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम अपने पूरे कोड को, जो हमने पिछले 7 एपिसोड्स में कोड लिखा है, उसको रीस्ट्रक्चर करेंगे और प्रोडक्शन के लिए रेडी करेंगे। प्रोडक्शन एज एन हम उसको इस तरह रेडी करेंगे कि सो दैट इट कैन बी डिप्लॉयड एनीवेयर ऑन एनी क्लाउड, एनी मशीन। मतलब आप विंडोज़ मशीन पे चलाओ तो भी चले, लिनक्स पे चलाओ तो भी चले, मैक पे चलाओ तो भी चले, और किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे चलाना है तो भी वहाँ पे इजीली आप चला सको। और इसके लिए हमें यूज़ करना होगा कंटेनर्स का। कंटेनर एक काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है और काफ़ी वास्ट भी है। तो हम बहुत इन डेप्थ नहीं समझने वाले हैं, बट हम उतना समझेंगे जितना हमें अपने इस ट्रेडिंग ऑटोमेशन बॉट को चलाने के लिए ज़रूरत है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। Warning disclaimer. This video is for educational and informational purposes only. It is not financial advice, investment advice, trading advice, or a recommendation to buy or sell any security. तो शुरू करते हैं। देखो, डॉकर एक टूल है जो कंटेनर्स बनाने में हेल्प करता है। अब कंटेनर्स क्या हैं, ये मैंने इस वीडियो के लेटर हाफ में समझाया है, ठीक है। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हो और इन डेप्थ समझना चाहते हो कि कंटेनर्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, पूरा सेटअप कैसे होता है, छोटी छोटी चीज़ें समझनी है, तो इस वीडियो के लेटर हाफ में मैंने पूरा कंटेनर्स के ऊपर एक सेशन डिलीवर किया था, वो अटैच कर दिया है। बट फर्स्ट हाफ में हम वीडियो के अपने इस ट्रेडिंग बॉट को कंटेनर्स के अंदर कैसे रन करना है और स्केड्यूल कैसे करना है वो समझेंगे। देखो, कंटेनर्स के अंदर किसी भी ऐप को रन करने के ना बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एक तो काफ़ी सिक्योर रहता है, दूसरा स्केड्यूलिंग में काफ़ी इजी हो जाता है। आपको कुछ किसी भी टाइम पे इजीली स्केड्यूल कर सकते हो, किसी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है। और डिपेंडेंसी, जो सिस्टम रिलेटेड डिपेंडेंसीज रहती है ना, वो सारी डिपेंडेंसीज खत्म हो जाती हैं। तो बहुत ही लॉजिकल है किसी भी एप्लीकेशन को कंटेनर में चलाना। इनफैक्ट जितनी आप आज की डेट में जितनी भी वेबसाइट्स यूज़ करते हो या जो बड़ी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गई, जैसे कि आप नेटफ्लिक्स चलाते होगे, प्राइम वीडियोस चलाते होगे, ये सारी कंटेनर्स के अंदर चलती हैं। ये सारी कंटेनराइज्ड हैं और ये ऑटो स्केलिंग एक फीचर होता है कंटेनर्स में। मतलब अपने आप वो लोड को जज करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। वो सारे फीचर्स आपको कंटेनर्स के थ्रू ही मिलते हैं, उसका रास्ता कंटेनर्स से होके जाता है, ठीक है। तो हमें उतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम नहीं डेवलप करना है, बट हाँ, टू एन एक्सटेंट ऐसा करना है कि क्योंकि यार एंड ऑफ द डे ये बॉट भी आप डिप्लॉय करोगे और इसमें पैसे लगाने वाले हो, तो इसको इतना तो बनाओ कि ये चलते चलते फट ना जाए और आपका बॉट ट्रेड्स लगाने के बाद कहीं बीच में ना अटक जाए, ठीक है। तो पहले हम इंस्टॉलेशन समझते हैं कि डॉकर का इंस्टॉलेशन कैसे करना है। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं, बस सर्च करना है यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप। ये पहला लिंक आप खोल लीजिए। ओके, तो देखो डॉकर डेस्कटॉप, ऑब्वियसली इसके पेड प्लान हैं, ठीक है। बट हमें ये डॉकर पर्सनली यूज करना है क्योंकि हम इसे इंडिविजुअली यूज करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है और जितने फीचर्स इसके साथ मिलते हैं उसमें हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। देखो, इसका काम कैसे आने वाला है, मतलब हमारे इंडिविजुअल यूज के लिए कैसे यूज होने वाला है। डॉकर ना एक तरह से आपको प्राइवेट स्पेस दे देता है अपनी स्क्रिप्ट्स को चलाने के लिए। कोई इंटरफेरेंस नहीं, एक इंडिविजुअल प्रोसेस रहता है जो आपके सिस्टम पे साइलेंटली रन होता है, बैकग्राउंड में रन हो सकता है और स्केड्यूलिंग काफ़ी ईजी हो जाती है इसकी। तो हम पहले कंटेनर इमेजेस बनाएंगे, फिर कंटेनर को रन करेंगे और फिर समझेंगे कि अपने बॉट को, हम बोलते हैं ना कि एवरी डे 9:20 हमें स्केड्यूल करना है। हमारी स्ट्रेटजी का ये पार्ट रहा है, हमने स्टार्टिंग में स्ट्रेटजी के रूल्स रिव्यू किए थे। तो एवरी डे 9:20 आप खुद से इसको स्केड्यूल करके छोड़ दोगे और फिर ये जो भी लैपटॉप पे आप चला रहे हो या जो भी मशीन पे आप चला रहे हो, उस मशीन को आप कंटिन्यूसली ऑन रखोगे, इंटरनेट कनेक्टेड रखोगे। उसके अलावा फिर आपको कुछ नहीं करना है। ये बॉट खुद से सुबह जितने टाइम आपने शेड्यूल किया होगा अपने आप चलेगा, अपने आप बंद हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे अपने आप चलेगा, फिर नेक्स्ट डे अपने आप बंद हो जाएगा
और आपके डेटाबेस में अपडेट्स करता रहेगा। डेटाबेस हमने इंटीग्रेट किया था MongoDB, उसका भी वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, आप देख सकते हो, नहीं देखा है तो ठीक है। तो ये बहुत ही सीमलेस एक्सपीरियंस रहेगा। तो हम ये वाला ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम गेट स्टार्टेड करते हैं यहाँ पे, और इसके लिए आपको ना ऑब्वियसली अकाउंट बनाना पड़ेगा। मेरा अकाउंट ऑलरेडी है, तो मैं वही सेम अकाउंट यूज कर ले रहा हूँ। मैं बना नहीं रहा हूँ, बट आप नया अकाउंट बना सकते हो या गूगल से डायरेक्टली साइन इन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अपने पर्सनल आईडी से कर रहा हूँ इस बार, टेमिंग निफ्टी से नहीं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। डॉकर डेस्कटॉप पे ये हमने आईडी बना ली है अपनी, और इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी के लिए। और हम यहाँ प्रोडक्ट्स में जाएंगे, सेम पेज पे आप यहाँ प्रोडक्ट्स में जाओगे, और यहाँ पे देखो ये सेकंड ऑप्शन है डॉकर डेस्कटॉप का, आप इसको क्लिक करोगे। और यहाँ पे ना देखो हर प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप का वर्जन दिया हुआ है। तो आप इसमें से अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो मैक वाला वर्जन डाउनलोड कर सकते हो, आप लिनक्स यूज कर रहे हो तो वो डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप आर्म बेस्ड प्रोसेसर यूज कर रहे हो विंडोज के साथ, तो आपको ये वाला यूज करना है वर्जन। बट आपको कुछ नहीं पता है और आप विंडोज मशीन यूज कर रहे हो, तो बस ये वाला यूज कर लो, ये थर्ड वाला, ठीक है। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो क्विकली ये डाउनलोड हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी स्पीड आ रही है, ठीक है। तो अभी हम इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इंस्टॉलेशन के बाद फिर हम कोड में समझेंगे इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, प्रीटी इजी। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एज इज जो स्टेप्स है वो फॉलो कर लो और आपका बॉट चलने लग जाएगा। अभी भी चल ही रहा है, बट आपको अभी मैनुअली आके चलाना पड़ता होगा डेली, तो वो काम अब ऑटोमेटेड हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डेली चलेगा, डेली खुद से एग्जिट हो जाएगा। तो ये डाउनलोड हो चुका है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम। ओके, तो ये इंस्टॉलेशन स्क्रीन है हमारी, ठीक है। इसमें तीन ऑप्शन है, ये सेकंड वाला डिसेबल्ड है, आप इसको भी अलाउ करोगे, ठीक है। अच्छा, ये कंटेनराइजेशन या डॉकर डेस्कटॉप जो सॉफ्टवेयर है या फिर ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो आपके पुराने सिस्टम्स होते थे जैसे विंडोज 98 हो गया या एक्सपी हो गया, विस्टा हो गया, थोड़े पुराने जनरेशन के सिस्टम पे ये चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, ये नहीं चलेगा वहाँ पे। और आपका हार्डवेयर भी थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए ये सब चलाने के लिए, मतलब कमज़ोर हार्डवेयर पे ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा पीसी बिल्ड हो तो चलेगा। बेसिकली कई सारे पुराने पीसीज में वर्चुअलाइजेशन एक टेक्नोलॉजी होती है, वो नहीं आती थी। आज की डेट में अगर हाँ आपने कोई भी लैपटॉप आज से 2 साल 3 साल पहले खरीदा होगा तो उसमें सब काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन हमें चूज करना है एंड जस्ट क्लिक ओके, ये इंस्टॉल हो जाएगा। 2-4 मिनट लेगा ये इंस्टॉलेशन में, थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है। अच्छा, इस जब तक इंस्टॉलेशन हो रहा है तब तक मैं बता देता हूँ आपको, इस वीडियो के लेटर हाफ में डॉकर या कंटेनराइजेशन एज अ टेक्नोलॉजी, इसमें और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और कैसे आप इन डेप्थ जा सकते हो, वो सब एक्सप्लेन किया है मैंने। वीडियो के फर्स्ट हाफ में हम बस अपने बॉट को, ट्रेडिंग बॉट जो हमने अभी तक लिखा है पाइथन का स्क्रिप्ट, उसको कंटेनर के अंदर डाल के चलाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको शेड्यूल कर रहे हैं, बस इतना पार्ट है, ठीक है। ओके, ये इंस्टॉलेशन हो गया है, अभी इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम विंडोज एक्स दबा रहा हूँ मैं, ठीक है। और ओके, या फिर यहाँ पे आप सर्च कर लो, विंडोज एक्स छोड़ दो, यहाँ पे हम टर्मिनल सर्च कर लेते हैं, ठीक है। ये टर्मिनल आ गया, इसको रन एज एडमिन कर देना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लिखना है डॉकर हाइफन हाइफन वर्जन। अगर आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है विच मीन्स आपका डॉकर डेस्कटॉप सही से इंस्टॉल हो गया है और आप डॉकर को एक्सेस कर पा रहे हो। दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है, यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप एक ऐप आ गया होगा, आप इसको भी ओपन कर लो, ठीक है। जब आप इसको डॉकर डेस्कटॉप को खोलोगे तो ये फर्स्ट टाइम ऐसे लाइसेंस अग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लो। एंड फिर आपको ये डॉकर हब पे, इससे पहले हमने ना लॉगिन किया था ना अभी, तो सेम क्रेडेंशियल्स देके यहाँ पे आपको डॉकर डेस्कटॉप पे भी लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पे भी जीमेल अकाउंट ही यूज कर लूंगा अपना और ये कनेक्ट हो जाएगा।
फ्यू मिनट्स। ओके, तो ये हो चुका है। अब इसको मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ऑलराइट, तो ये ओपन हो चुका है डॉकर डेस्कटॉप। अब इसमें लेफ्ट साइड में सारे आपके मेन्यू ऑप्शंस हैं। आपको जो ज़्यादातर चीज़ें यूज़ होने वाली हैं वो है कंटेनर्स और इमेजेस। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को आप इग्नोर कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो। और सही मायने में बॉट चलाने के लिए इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं कुछ। आप कंटेनर्स और इमेजेस इन्हीं के बीच में रहोगे मोस्टली, अगर आप लोकल सिस्टम पे चीज़ें चला रहे हो। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं और समझते हैं अब हमें कोड में क्या चेंजेस करने हैं। इसको भी बंद कर देता हूँ मैं, एंड हम विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं अपना। ठीक है, तो ये हमारी सेम रिपोजिटरी है जिसपे हम अभी तक काम करते आ रहे हैं, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कोड सैंपल्स हैं जो हमने वेरी इनिशियल वीडियोस में समझे थे जब हम पाइथन सीख रहे थे। तो हमने जो भी छोटे छोटे सैंपल एप्लीकेशंस बनाए थे या एग्जांपल्स देखे थे, वो सारे कोड सैंपल के अंदर है। ठीक है, फिर हमने ब्रोकर से डेटा फेच करने का कोड लिखा था फर्स्ट टाइम। तो वो एक डिफाइनेज नाम का फोल्डर है, उसके अंदर डिफाइनेज एक फाइल है। इसमें हमने फर्स्ट टाइम ब्रोकर इंटीग्रेशन किया था। ठीक है, और निफ्टी का डेटा फेच किया था। सिमिलरली धन के साथ भी हमने यही किया था। ठीक है, धन के लिए हम डेटा लेके आए थे। उसके बाद मोंगो डीबी के लिए हमने एक फाइल ये अलग से बनाई थी जहां मोंगो डीबी सीख रहे थे। तो ये सैंपल फाइल है, सैंपल पाइथन कोड है जो मोंगो के लिए था। और ये हमारा strangle.py है जो हम रेगुलरली डेवलप करते हुए आ रहे हैं ओवर द टाइम। और यही धन वाले फोल्डर के अंदर भी strangle.py है जो हमने फर्स्ट टाइम धन के लिए कोड लिखा था स्ट्रैंगल का। ठीक है, सेम चीज। तो इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करते हैं। हमें ये सारी चीजें तो नहीं चाहिए। हमारे काम की फाइल जो है बॉट को चलाने के लिए अभी के लिए वो है strangle.py, अगर आप डिफाइनेज यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर आप धन यूज कर रहे हो तो strangle.dhan, ये वाली फाइल हमारे काम की है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस डेटा लाने का डिफरेंस है, ब्रोकर से कैसे डेटा लाना है वो डिफरेंस है। बाकी जो लॉजिक है अंदर, जो इफ एल्स कंडीशंस लिखी हुई हैं या लूप्स लिखे हुए हैं, वो सारे सेम ही काम करेंगे। इवन मोंगोडीबी का इंटीग्रेशन और स्लैक का इंटीग्रेशन भी सेम ही रहने वाला है। इधर आप धन यूज कर रहे हो या फिर डिफाइनेज यूज कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं आज थोड़ा सा इसको रिस्ट्रक्चर कर रहा हूं और एक नया फोल्डर बना देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो डिफाइनेज के अंदर नहीं बनाना है एक्चुअली, मुझे रूट पे बनाना है। तो मैं यहाँ पे आके ऐड फोल्डर, सॉरी नॉट टू चैट, न्यू फोल्डर। ठीक है, और इसको बोल देते हैं हम स्ट्रैंगल। ठीक है, ये स्ट्रैंगल नाम का फोल्डर बन गया। अब जो डिफाइनेज के अंदर ये स्ट्रैंगल वाली फाइल है ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं, स्ट्रैंगल के अंदर पेस्ट। ठीक है, कॉपी इसलिए किया क्योंकि हो सकता है बहुत लोग अभी भी पुराने वीडियोस पे ही हों, और अगर मैं ये फाइल वहां से पूरी पूरी मूव कर दूंगा तो फिर लोगों को स्ट्रगल हो सकता है ये फाइल ढूंढने में। तो मैं एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रहा हूँ, रादर एक नया मैंने फोल्डर बना दिया है स्ट्रैंगल, और उसके अंदर strangle.py है। ठीक है, अब देखो ये कोड अभी भी एज इज है, अगर इसमें कुछ चेंज नहीं है। इसको स्ट्रैंगल को अगर मैं रन करूं तो जैसे पहले रन हो रहा था ये अभी भी रन होगा। कंट्रोल F5 हिट किया है मैंने, और ये सिमिलर फैशन में जैसे पहले चलता था वैसे ही अभी भी चलेगा। देखो व्हाइल लूप स्टार्टेड। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये हमारा डेटाबेस है, अगर आपको याद हो। इसमें एक पोजीशन ओपन होगी, हाँ ये वाली, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ फाइल को अपनी एक नए फोल्डर में डाला है अपनी रिपोजिटरी में, ताकि हम उस पर आगे काम कर सकें। अब हमें करना क्या है? डॉकर को यूज करने के लिए आपको अपनी एप्लीकेशन वाली फाइल जो है आपकी, जो पाइथन स्क्रिप्ट आपने लिखी है, उसके साथ में एक डॉकर फाइल बनानी पड़ती है। ठीक है, और ये सारी चीजें क्यों करनी है ये लेटर हाफ में मैंने समझाया है, जो यहाँ पे डॉकर का एक डिटेल्ड सेशन डिलीवर किया है, उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, आप उसको देख सकते हो। अभी के लिए इसको जस्ट एज एस फॉलो कर लो आप। तो यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे हम, तो न्यू फाइल, और इसको नाम देंगे, इस फाइल का नाम एग्जैक्टली यही होना चाहिए, नाम चेंज नहीं करना है। नाम चेंज कर दोगे आप तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और इसमें हम
ये सारा कोड पेस्ट करने वाले हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी कि क्या कोड है ये, ठीक है। डॉकर फाइल के अंदर ये पीस ऑफ कोड हमने मूव किया है। अब इसका मतलब क्या है, देखो फ्रॉम पाइथन 3.118 स्लिम, ये तो एक बेस इमेज हो गई, मतलब ये एक ओएस इमेज है, लिनक्स ओएस है, और उसके अंदर पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड पाइथन है उसके अंदर, ठीक है। अब उसके ऊपर हम कुछ अपडेट्स रन कर रहे हैं, अपना टाइम जोन सेट कर रहे हैं, और अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं। ये वेरिएबल्स हम यूज करते आ रहे हैं ना, स्लैक टोकन, एपीआई टोकन, एपीआई सीक्रेट, टीओटीपी, कनेक्शन स्ट्रिंग मोंगोडीबी के लिए, ठीक है। तो हम ये वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हम उनकी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वैल्यू हम रन टाइम पे पास करेंगे। याद देना, मतलब पासवर्ड्स को हम बहुत ही सेफ लेके चलना चाहते हैं, हम कोड में कहीं कमिट करके पुश नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लोकल में भी ये देखो env फाइल बना रखी है। ओके, ये env फाइल भी एक्चुअली मुझे यहाँ मूव करनी पड़ेगी, कॉपी एंड ये स्ट्रैंगल के अंदर पेस्ट। हाँ, ओ शिट, तो env फाइल रिकॉर्ड हो गई, मुझे मास्क करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो env फाइल भी यहाँ पे डाल दी है। env फाइल में बेसिकली हमारे क्रेडेंशियल्स रहते हैं, लेकिन जब हम डॉकर इमेज बना रहे होते हैं तो ये env फाइल हमें वहां नहीं चाहिए होती है। हम इमेज के अंदर पासवर्ड्स डायरेक्टली नहीं डालते हैं और ना ही कोड में डालते हैं, तो उसके लिए फिर हम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, और जब हम कंटेनर चलाने जा रहे होते हैं तो चलाने के टाइम पे हम ये वेरिएबल्स की वैल्यूज को पास कर देते हैं। अभी कैसे करेंगे ये हम समझेंगे आगे, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम इजीली समझ पाए, ये हमने टाइम जोन सेट करी है, उसके बाद ये डेट एको की है, ये एज इज लिख सकते हो आप, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अब मेन चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो हम strangle.py जो फाइल है ना हमारी करंट फोल्डर में, इसको मूव कर रहे हैं ऐप एसआरसी के अंदर, ठीक है। डॉकर अपने आप में एक इंजन, एक सेपरेट स्पेस है, ठीक है, डिफाइंड प्राइवेट स्पेस है, और उसके अंदर ऐप नाम का फोल्डर होगा और उसके अंदर एसआरसी नाम का फोल्डर होगा, वहां पे strangle.py को मूव कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं ये लेटर हाफ में आप समझ जाओगे अगर आप डॉकर वाला सेशन पूरा देखोगे तो, ठीक है। सिमिलरली requirements.txt, अच्छा requirements.txt एक फाइल रहती है जो हमें कंटेनर्स के लिए बनानी पड़ती है अगर आप पाइथन यूज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने पाइथन कोड में ना कई सारे पैकेजेस यूज किए हैं, जैसे कि ये डेट टाइम यूटिल यूज किया है, .env यूज किया है, टेमिंग निफ्टी यूज किया है, या आपने अपने लोकल सिस्टम पे तो इंस्टॉल किए थे पिप इंस्टॉल करके, तभी ये चल रहा है। लेकिन कंटेनर एनवायरनमेंट ना एक तरह से पूरा नया एनवायरनमेंट रहता है, नया ओएस रहता है, वहां पे ये सारे पैकेजेस नहीं होंगे, तो वो सारे पैकेजेस आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। मतलब आपकी स्क्रिप्ट को चलने के लिए क्या क्या पैकेजेस चाहिए वो आप requirements.txt के अंदर डिफाइन करते हो, ठीक है। तो हम क्विकली यहाँ पे एक बना लेते हैं फाइल requirements.txt, न्यू फाइल requirements.txt, ठीक है। और इसमें मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट ऑफ पैकेजेस हैं जो मैं रेगुलरली यूज करता हूँ, मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, बट फॉर्मेट समझना यहाँ पे जरूरी है, किस फॉर्मेट में देना है। जैसे आप देखो ये पाई मोंगो, ठीक है, पाई मोंगो पैकेज है मोंगोडीबी से इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो पाई मोंगो इक्वल्स टू उसका वर्जन, इस तरह से देना है आपको, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखो तो आप ये पैकेज भी रिकॉग्नाइज कर पाओगे, स्लैक एस डी के, स्लैक से इंटरेक्ट करने के लिए हम ऐसे ये पैकेज देते हैं। ऐसे ही टेमिंग निफ्टी भी आपने इंस्टॉल किया होगा, उसके लिए ये इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो requirements.txt में आप अपनी जो पैकेजेस आपने अपने पाइथन के लिए यूज किए हैं उनका वर्जनिंग यहाँ पे फ्रीज करते हो, मतलब पैकेज का नाम इक्वल्स टू कौन सा वर्जन यहाँ पे डाल देते हो आप। अब इस फाइल को भी हमें ना यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा, तो requirements.txt को भी हम एप्स एसआरसी के अंदर डाल रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हम वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर रहे हैं, मतलब जब कंटेनर के अंदर कंटेनर स्टार्ट होता है तो कौन सी डायरेक्टरी वर्किंग डायरेक्टरी हो, मतलब ये स्क्रिप्ट कहाँ पे जाके चले, तो ये वो डिफाइन कर रहे हैं हम। उसके बाद ये requirements.txt से पिप इंस्टॉल कर रहे हैं, विच इज़ ओके। और यहाँ पे हम अपनी स्क्रिप्ट को चला रहे हैं strangle.py पाइथन, ठीक है। तो ये एज इज आप कॉपी कर सकते हो और यूज कर सकते हो। इसमें बस ये जो वेरिएबल्स है ना, ये एक इंपॉर्टेंट क्रक्स है। तो जितने वेरिएबल्स सीक्रेट्स हैं उनके लिए आपको वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे ताकि हम उनको इजीली पास कर सकें,
ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। हमने डॉकर फाइल बना ली, हमने requirements.txt फाइल बना ली, और हमने अपनी जो स्क्रिप्ट वाली फाइल थी, मतलब पाइथन का जो कोड था बॉट वाला, वो भी इधर अलग निकाल लिया है। ठीक है, अब हम इसको बिल्ड करेंगे। तो डॉकर के लिए डॉकर इमेज होती है, और डॉकर इमेज को बिल्ड किया जाता है। कैसे करते हैं वो देखते हैं अभी। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा डॉकर बिल्ड, उसके बाद अपनी इमेज का आप क्या नाम देना चाहते हो वो नाम। तो हम यहाँ पे देते हैं स्ट्रैंगल बॉट हाइफन बॉट, और ये है कहाँ पे, तो ये है हमारा स्ट्रैंगल फोल्डर के अंदर है। ठीक है, और इसको हम चला देते हैं डॉकर बिल्ड टी स्ट्रैंगल बॉट। तो अब देखो, आप ये इंस्टॉलेशन इसने शुरू कर दिया है, मतलब ये बिल्ड कर रहा है इमेज को। और इमेज के अंदर जो जो चीजें हमें चाहिए वो सारी एक एक करके देखो, जो हमने डॉकर फाइल में इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं ना, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसने अगर आप देखो तो अभी ये apt रन अपडेट इसने चलाया, apt गेट अपग्रेड चलाया, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। अगर मैं ऊपर दिखाऊं आपको डॉकर फाइल, ये रही डॉकर फाइल। तो ये देखो गेट अपडेट, गेट अपग्रेड। ठीक है, तो ये लिनक्स ओएस जो बेस इमेज है ना, उस पे लेटेस्ट अपडेट्स इंस्टॉल करने के लिए ये दो कमांड चलाता है हम। जैसे विंडोज में अपडेट्स होते हैं ना, वैसे लिनक्स में भी अपडेट्स होते हैं, बट वहां पे कमांड के थ्रू आप करते हो ऐसे, इस तरह से। ठीक है, तो ये 2-3 मिनट लेगी आई थिंक इमेज बिल्ड होने में। ऑलराइट, तो अभी देखो हम लास्ट लेयर पे पहुंच गए हैं, जहां पे पाइथन के पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो हमारी इमेज बिल्ड हो चुकी है। अब इमेज जो आउटपुट आया है उसका देखने के लिए हमें एक कमांड है डॉकर इमेज ls। ठीक है, तो अगर आप देखो स्ट्रैंगल बॉट हमने नाम दिया था इमेज का, स्ट्रैंगल बॉट नाम की इमेज बन गई है, उसका साइज दिया हुआ है यहाँ पे, उसकी आईडी दी है और टैग दिया हुआ है। ठीक है, अब ये इमेज जो है ना, इस इमेज को लेके आप कहीं भी चला लो जाके, ये आपके बॉट को एज इज चला देगी। मतलब ये इमेज आप, अगर मैं आपको पास कर देता हूँ, आप अपने लोकल पे भी चला सकते हो, बस आपको क्रेडेंशियल्स अपने पास करने होंगे। तो ये ब्यूटी है मतलब डॉकर इमेजेस की। एक बार आप उसको बिल्ड कर लो, सही से पैकेज कर दो, तो ये एक तरह का पैकेज है, स्क्रिप्ट इसी के अंदर पैकेज्ड है। और ये पैकेज आप जिसको भी दूंगा ना मैं, वो बस एग्जीक्यूट कर सकता है। इवन इस इमेज को अपने सिस्टम पे हम शेड्यूल भी कर सकते हैं। अब इसको पहले रन करके देखते हैं कि ये चलती कैसे है। ठीक है, तो डॉकर को बिल्ड करने का कमांड वाज प्रीटी सिंपल। मैं एक बार वापस से समझा देता हूं क्या था। डॉकर को बिल्ड करने के लिए हमने लिखा है डॉकर, डॉकर के बाद बिल्ड। ठीक है, हाइफन टी स्टैंड्स फॉर टैग्स, कि क्या टैग देना चाहते हो आप उसको। तो मैंने नाम, मतलब बेसिकली आप नाम दे रहे हो अपनी इमेज को, तो वो मैंने लिखा है स्ट्रैंगल बॉट। और कौन सी डॉकर फाइल बिल्ड करनी है या किस लोकेशन पे है, तो हमने डॉट स्ट्रैंगल दिया, मतलब इस फोल्डर के अंदर जाके बिल्ड करो। तो डॉट स्ट्रैंगल के अंदर हमारी डॉकर फाइल है। अगर मैं ये स्पेसिफाई नहीं करता ना तो कंफ्यूजन होती, क्योंकि एक डॉकर फाइल अच्छा नहीं है इसमें और कहीं भी नहीं है। मींस अगर मल्टीपल डॉकर फाइल्स होंगी ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आप जिस डायरेक्टरी में बिल्ड कर रहे हो आपकी डॉकर फाइल वहीं पे है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चला सकते हो, ये फिर ये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपकी डॉकर फाइल किसी सब डायरेक्टरी के अंदर है तो वो डायरेक्टरी का नाम यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ हो। ओके, सो इमेज हमारी बिल्ड हो गई, अभी हमें इसको चलाना है। तो चलाने के लिए देखो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो ना, सबसे सिंपल चीज है कि आप एआई की हेल्प लो। चैट जीपीटी, जेमिनी, कोपायलट, कुछ भी यूज कर लो जो आपको फ्रीली अवेलेबल हो। ठीक है, तो डॉकर रन इज द कमांड। मैं एक बार लिख के आप लोगों को दिखा देता हूं कहीं पे, विंडोज आर
नोटपैड। ओके, तो अगर आप देखो ये कमांड है, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं, डॉकर रन। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है कि डॉकर रन बेसिक सिंपल चीज। आईटी मतलब इंटरेक्टिव, मतलब जिस कंसोल पे हो आप उसी कंसोल को वो आउटपुट विंडो में कन्वर्ट कर देगा उस कंटेनर के लिए। अभी चला के देखेंगे, समझ आ जाएगा। देन यहां पे -e का मतलब है एनवायरमेंट वेरिएबल्स। अब ये एनवायरमेंट वेरिएबल्स वही हैं जो आपने अपने डॉकर फाइल में डिफाइन किए थे। तो मैं एक बार डॉकर फाइल को निकालता हूं जरा। ये रही हमारी डॉकर फाइल। अब अगर आप यहाँ पे देखो स्लैक टोकन, ये इंटीग्रेट एपीआई टोकन, इंटीग्रेट एपीआई सीक्रेट, टीओटीपी, ठीक है, इनकी वैल्यूज हमने डिफाइन नहीं की थी वहां पे। ये वैल्यूज हम यहाँ पे पास करने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट में हम बताने वाले हैं कौन सी इमेज से इसको रन करना है। तो इमेज हमने अभी जस्ट बनाई स्ट्रैंगल बॉट नाम की, वो यहाँ पे देना है। और इसके ये जो डबल कोट्स है ना, डबल कोट्स के बीच में आपकी वैल्यूज आने वाली हैं। मैंने लिखी नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली मैं शेयर नहीं करना चाहूंगा वो वैल्यूज, बट इस तरह से आपका ये पूरा एक कमांड फॉर्म होता है, ठीक है। अभी मैं इसको क्विकली चला देता हूं, मेरे पास ऑलरेडी ये नॉट हेयर, ओके, यहाँ पे। तो ये मैंने पेस्ट किया। अब इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स वगैरह हैं तो इनको मैं ऑब्वियसली मास्क करूंगा। अब यहाँ पे मैं एंटर हिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये आपका बॉट स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे अभी हमें हमारे पास 2 एंट्रीज दिख रही हैं स्ट्रैंगल में। इसको रिलोड करोगे तो 3 एंट्रीज आ गई हैं, ठीक है। तीसरी एंट्री की डेट, या आज की डेट दिखाएगा 18 जनवरी, ठीक है, 4/18। ये देखो 4/19, ठीक है। प्रिटी इजी। तो ये तो वन टाइम एग्जीक्यूशन हुआ कि ये एग्जीक्यूट कर दिया। अब इस इतना सर्कस हमने किया क्यों? इतना सर्कस हमने इसलिए किया कि हम इसको शेड्यूल कर सकें, शेड्यूल कर सकें, और अगर जरूरत पड़े आगे हम क्लाउड पे भी डिप्लॉय कर सकें, ठीक है। तो पहले इसकी शेड्यूलिंग देखते हैं कि शेड्यूलिंग होती कैसे है। अच्छा, एक चीज और, अभी जो ये कंटेनर रन किया ना हमने यहाँ पे, ये जो यहाँ पे रन हुआ, ठीक है, अगर आप डॉकर डेस्कटॉप पे जाओगे और आप कंटेनर्स के अंदर जाओगे तो ये इस तरह से यहाँ पे दिखाएगा। जितने कंटेनर्स चलेंगे वो सारे कंटेनर के अंदर आपको दिखाई देंगे डॉकर डेस्कटॉप पे, और आप उसके ऊपर क्लिक करके वहां पे भी उसके लॉग्स देख सकते हो। तो मान लो आपका एप्लीकेशन चल रहा था और चलते चलते क्रैश हो गया, तो यहाँ पे आके देख सकते हो एग्जैक्टली क्या हुआ उसमें, ठीक है। और जितनी इमेजेस आप बिल्ड करोगे वो इमेजेस के अंदर आएंगी। तो स्ट्रैंगल बॉट हमने बिल्ड किया था, वो स्ट्रैंगल बॉट यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है। अब शेड्यूलिंग देख लेते हैं। शेड्यूलिंग के लिए हमें कुछ नहीं, बस टास्क शेड्यूलर का यूज करना है। तो सर्च में आ जाओ, आप यहाँ पे लिखो टास्क शेड्यूलर। इसके प्रोनाउंसिएशन को लेके ना मेरे को हमेशा कंफ्यूजन रहता है। बहुत लोग शेड्यूलर बोलते हैं, बहुत लोग शेड्यूलर बोलते हैं, मैं शेड्यूलर बोलता हूँ, ठीक है। तो इस पे आके अभी ये राइट साइड में आपको, ये जूम होता है क्या? वो नहीं हो रहा है, चलो एडिटिंग में जूम कर लेंगे। तो राइट साइड में ये क्रिएट बेसिक टास्क है, ठीक है। क्रिएट बेसिक टास्क पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी नाम देना चाहो दे दो, रन माई ट्रेडिंग बॉट, ठीक, कुछ जो मर्जी नाम दे दो। उसके बाद नेक्स्ट, कब ट्रिगर करना है इसको, मतलब कब कब चलना है, डेली, वीकली, मंथली, वन टाइम, ठीक है। तो आप डेली कर लो, अगर आपको सुबह 9 डेली 9:20 पे या 9:15 पे चाहिए, ठीक है, तो डेली कर लो। नेक्स्ट, किस टाइम पे चाहिए और कब से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं इसको अभी के लिए रखता हूँ 18, आज की डेट, और इसको थोड़ी देर बाद के लिए शेड्यूल करते हैं तो हम देख भी पाएंगे एग्जीक्यूशन। तो 4:21 हो रहा है, इसको मैं कर देता हूँ 4:25 कर देता हूँ, ठीक है। 4:25 पे ये अपने आप चल जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं। क्या करना क्या है शेड्यूलिंग में या स्केड्यूलिंग में, हमें करना यह है कि एक प्रोग्राम स्टार्ट करना है, ठीक है।
वो प्रोग्राम का नाम क्या है वो हम यहाँ पे देंगे। तो प्रोग्राम का नाम है डॉकर, और डॉकर के साथ हमें आर्ग्यूमेंट्स क्या देने हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स जो हमारा डॉकर रन वाला पूरा कमांड था ना, ये वाला किधर गया नोटपैड, ये वाला पूरा कमांड, इसमें बस आईटी की जगह ना -d आ जाएगा, बाकी एज इज पूरा सेम रहने वाला है। ठीक है, आईटी का मतलब इंटरेक्टिव होता है। जब हम रिमोटली या मतलब विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन कुछ भी रन करते हैं ना, तो वहां पे इंटरेक्टिव नहीं रख सकते, वहां पे हमें डिटैच्ड मोड में चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो डॉकर रन, तो डॉकर तो हमने पहले ही बोल दिया क्या चलाना है डॉकर, और क्या आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे। तो ये एज इज उठा के बस ये यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये देखो लास्ट में स्ट्रैंगल बॉट इमेज का नाम आ रहा है, और आगे हमने रन और वो सब आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। अभी नेक्स्ट कर लेते हैं, 2 मिनट ही बचे हैं और जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ, डेली एट 4:25 एवरी डे। ठीक है, स्टार्ट अ प्रोग्राम, डॉकर रन, एंड डिटैच मोड में चलाना है इसलिए -d, एंड -e फॉर एनवायरमेंट वेरिएबल्स, एंड ये हमने एनवायरमेंट वेरिएबल्स पास किए हैं। दैट्स इट, इसको हम फिनिश कर देते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखो तो टास्क शेड्यूलर के अंदर यहाँ पे एक शेड्यूल क्रिएट हो गया होगा, ये रहा, रन माई बॉट। ठीक है, रेडी एट 4:25 एवरी डे। तो अभी टाइम हो रहा है 4:23, 2 मिनट में ये स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें कंटेनर्स के अंदर एक ही कंटेनर दिख रहा है जो कि स्टॉप स्टेट में है। अगर रनिंग स्टेट में होगा ना तो वो ग्रीन होगा। तो ये देखो इसके ऊपर लिख के आ रहा है एग्जिटेड। ठीक है, और कब स्टार्ट हुआ था, 5 मिनट्स अगो। ठीक है, तो अब हमने स्केड्यूल कर दिया है 4:25 के लिए, तो 1 मिनट के अंदर वो स्टार्ट होना चाहिए। अब होगा क्या ना, आप इसको स्केड्यूल करके अपने मार्केट आवर्स के लिए, जिस टाइम पे आपको बॉट चलाना है उस टाइम के लिए स्केड्यूल करके छोड़ सकते हो। ठीक है, ये डेली खुद से अपने आप चल जाएगा, बट आपको अपना सिस्टम ऑन रखना होगा और नेट कनेक्टेड रखना होगा, बस इतना सा करना है, नेट कनेक्टेड सिस्टम ऑन, और ये चल जाएगा। अच्छा, एक चीज और, सेबी का ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है फॉर एल्गो ट्रेडिंग, स्टैटिक आईपी वाला। आई होप आप लोगों को पता होगा अगर आप एल्गो ट्रेडिंग बहुत ही क्लोजली फॉलो करते हो। तो डाउन द लाइन ये मैंडेटरी होने वाला है कि आपको अपने ब्रोकर के साथ अगर ट्रेडिंग एपीआईज को कॉल करना है या कोई भी बाय ऑर्डर वगैरह प्लेस करना है, तो ऑर्डर एपीआईज के लिए स्पेसिफिकली आपको स्टैटिक एपीआई यूज करनी पड़ेगी। मतलब आप जो आईपी यूज कर रहे हो वो स्टैटिक होनी चाहिए। तो मैं इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो निकाल के समझाऊंगा कि एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हो, बट सॉल्यूशन उसके दो ही हैं। या तो आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बोलोगे कि भाई मुझे स्टैटिक आईपी चाहिए, या फिर आप क्लाउड पे मूव करोगे। अगर क्लाउड पे मूव करना है तो ये सर्कस करना ही पड़ेगा, मतलब ये डॉकर कंटेनराइजेशन आपका एप्लीकेशन का मैंडेटरी हो जाता है फिर। और यार कर लोगे तो ईजी ही है, आपके लोकल पे भी चीज़ें बहुत ही स्मूथ चलेंगी फिर। अच्छा, 4:25 हो गया है, तो बॉट हमारा चल गया होगा। अभी ये देखो, तो ये गूफी मेनिन्स्की, ये नाम जो है ना अपने आप रैंडमली देता रहता है। जो भी कंटेनर चलता है उसको कुछ भी रैंडम नाम दे देता है। आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो क्या नाम देना है कंटेनर को। तो ये अभी देखो कितने 19 सेकेंड्स एगो चला है। ठीक है, तो अब अगर हम डीबी में देखेंगे ना तो एक और 3 की जगह 4 एंट्रीज होनी चाहिए। देखें, हाँ देखो 4 एंट्रीज हो गई, और इसने एक एंट्री और क्रिएट कर दी है, ये देखो 4:25 की। ठीक है, तो यही होने वाला है आपके लाइव मार्केट में भी। पर अभी तो मार्केट ऑफ है, आज संडे है तो मैं संडे को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट जब ये लाइव मार्केट में चलेगा ना, अब तो शेड्यूल कर दिया ना, मतलब मैंने 4:20 के लिए किया, ऑब्वियसली मैं शेड्यूल चेंज करूंगा, बट आप चेंज कर लो अपने लिए और राइट टाइम पे शेड्यूल कर लो इसको, मे बी 9:15, और 9:15 को वो स्टार्ट होगा, 9:20 को इसका कोड एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगा, क्योंकि वो लूप के अंदर, कोड के अंदर भी आपने एंट्री टाइमिंग दी हुई है ना। किधर गया, तो डॉकर, हाँ ये स्ट्रैंगल में भी हमने टाइमिंग डाल रखी है आई थिंक, यहाँ पे ये इफ करंट टाइम इज ग्रेटर देन 9:20। तो अगर ये 9:15 को स्टार्ट भी होता है तो ये वाइल लूप के अंदर घूमता रहेगा जब तक ये कंडीशन मैच नहीं हो जाती है। तो 5 मिनट पहले स्टार्ट कर लो, इसको छोड़ दो, ये अपने आप सारे काम कर लेगा।
और स्टार्ट करना क्या है, शेड्यूल करना है, वो स्टार्ट खुद ब खुद हो जाएगा, बस आपका पीसी ऑन होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे आपको सारे लॉग्स वगैरह दिख जाते हैं, जितने जितने कंटेनर्स चलेंगे। तो जब आप शेड्यूल करके छोड़ दोगे, उन कंटेनर्स को आप बाद में आके यहाँ पे देख सकते हो कि क्या हुआ, और अगर कुछ फेलियर आता है तो भी आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि क्या फेलियर आया, वो लॉग्स के अंदर दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप था कंटेनराइजेशन का। कैसे आप अपने बॉट को कंटेनर्स के अंदर रन कर सकते हो, ट्रेडिंग बॉट को। और अभी इस वीडियो के आगे मैंने कंटेनर्स को बहुत ही डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। मतलब अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हो और आप समझना चाहते हो तो आप सीख सकते हो, नहीं भी हो तो भी समझना चाहते हो तो भी सीख सकते हो। ये सेशन मैंने कभी डिलीवर किया था, ये सेशन इंग्लिश में है, तो सॉरी अबाउट इट अगर आप हिंदी में एक्सपेक्ट कर रहे थे इसको, बट अभी के लिए यही है। अगर आप चाहते हो कि इसके अलावा भी आप कंटेनर्स पे कुछ और जानना है और मैं एक वीडियो और बनाऊं कंटेनर्स एक्सप्लेन करने के लिए, तो बोल देना कमेंट्स में, मैं बताऊंगा। बट अगर आप ये सीरीज पूरी फॉलो करते आ रहे थे, तो आज ये सीरीज पूरी खत्म होती है 8 एपिसोड्स में। यहाँ तक मैंने पूरा पाइथन सिखा दिया है आपको, जितना ट्रेडिंग के लिए चाहिए होता है। पाइथन के साथ साथ हमने पूरा एक बॉट डेवलप करके देख लिया है, उसको शेड्यूल करना भी सीख लिया है। अब यहाँ पे खत्म। ठीक है, अब इसके आगे के 2 वीडियोस अभी और आएंगे, बट वो क्लाउड डिप्लॉयमेंट के लिए है। ठीक है, तो अगर आप सब कुछ फ्री में चलाना चाहते हो तो यहाँ तक ठीक है। क्लाउड डिप्लॉयमेंट के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और अगर आप रिटेल ट्रेडर हो और बहुत ही स्टार्ट कर रहे हो जस्ट अपनी जर्नी एल्गो ट्रेडिंग में, तो मैं कहूँगा कि आप अपने लोकल सिस्टम पे ही स्टक रहो अभी, या स्टिक रहो वहीं पे, वहां पे चीजें ट्राई आउट करो, क्लाउड पे बाद में शिफ्ट करो। ठीक है, लेकिन ये जो स्टैटिक आईपी वाला पंगा आ रहा है ना, अगर आप लोकल सिस्टम पे चलाते हो तो आपको एक डेडिकेटेड स्टैटिक आईपी लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप फिर अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बात कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स मूव टू डॉकर 101। As part of this session, this is what we are planning to cover: the history of Docker, how to install Docker, then architecture and theory of Docker, what are images, what are Docker registries, and then we will, towards the end of this session, we will try to do a quick hands-on where we will take a sample .NET MVC app and then try to containerize it. So that's the agenda of this particular session. So to begin with, so let me tell you a short story. Back in the days when IT was just starting up, a lot of new companies being formed, a lot of new websites, a lot of new apps being launched, and the audience for these apps were, or the audience for this site was huge. We did not have any realistic number that what would be the target audience for these sites or for these apps. So in general, whenever you ask someone, okay, what would be the right size for this application to host, right size of a machine to cater this application or to host this application, so people start guessing there, and that's where they go wrong. Like people start guessing just to say, suppose a app or the site would require 50 to 60% of resources, and just to cater it in odd times, suppose what will happen if there are spikes, what will happen in peak hours, we don't want our application to go down. And while guessing all of this, people just decide, okay, let's go with a very big beefy machine so that we never go down and everything works smoothly. That's a very good plan. Application will definitely work out, and nothing will fail. It will always work. Now, what happens in this scenario is we get a very big physical machine, and it has all of the resources which are required, and install the OS on it, and then we install just 2 applications on it. Now, it's a very big machine. Suppose the operating system itself would be consuming around 15% of the total resources, and let's just say these 2 apps are consuming around 25% each. So it's 65% of total consumption on this big physical machine. So there is still 35% of resources which are lying around, sitting there.
and just being wasted. And they will never be used because there is no new app gonna come. Now, there could also be a question like, what if we could utilize the same machine and try to install the other applications as well, right? And there's nothing wrong in it. But let's assume one thing. So suppose my first two applications require X version of Java to run. Now, my new application, which we have developed, that requires a Y version of Java. Now, I can't host both of these on the same machine. Uh, there would be some challenges. And it's true for all of the applications, all of the other applications as well, not just with the Java applications. So yeah, we will not have the proper isolation for each of the applications so that uh, each application can have their own environment and they don't fiddle around with the other applications environments. So if we host everything on the same machine, that would be one problem. And if we don't host everything on this machine, then yeah, we are wasting the resources. So that was long back, how things were running, how things were going on. Now, to solve this problem, over a night, we got VMs, and that solved this problem of wastage of resources to a very good extent. Now, we still have a same big physical machine with all of these resources. Now, we install the operating system. This is our host operating system on this big physical machine. And on top of this, we are creating these VMs. So we are trying to utilize this big physical machine to its core. We are not leaving any of the resources for wastage. Now, this big physical machine is again, all of the resources here, CPU, RAM, storage, everything is divided and allocated to these VMs, which we see here, VM 1, 2, 3, 4, 5. And it doesn't have to be equal. It would be based on the need of the application which you are going to host on this particular VM. So now suppose we created these 5 VMs on top of this physical machine, and each VM will have their own operating system. And now we are ready with full-blown VMs. We can host any kind of application which we want here. Now, each application running inside a VM has their own environment. They're completely isolated. So anything running inside a VM1 doesn't know what's going on inside VM2. They're completely isolated. So yeah, now this is the stage where we can say we are utilizing 100% of resources of our big beefy machine which we bought, and we are not wasting anything, and we solved our initial problem. But still, there is still a scope for optimization here. So let's see. So if you see, this big physical machine has one operating system installed on it. Now each of these VMs again have their own operating system here, and these operating system would require a team to manage it. There would be licensing cost, and every month there would be patches and whatnot, security patches and everything. So it's simply an overhead just to host an application. So here we have 5 operating systems and one host operating system. What if there was a way we could directly run these applications on our host operating system without having to have a full-blown operating system or a full-blown VM, and still get the isolation which these VMs are providing us? What if there was a way to install these applications directly on this particular layer and just get rid of this layer? And that's what Docker is trying to do. That's what Docker solves. Okay, so let's see what's going on here. So we still have same big physical machine here. These are the resources, and we discussed about the VM model where we were distributing all of these resources and allocating to each VM. Now, on the right hand side, we have a comparison on the doc, how a container system would look like. So we have an operating system.
On that, we install any of the container runtime environment. And then instead of creating new VMs, we start creating containers. And these containers give you the exact look and feel of a VM, but they are not a full-blown VM. They give you the complete isolation. They give you the complete security. They give you the entire file system, the process tree. You get everything. You get the network interfaces. It just feels like that it's a full-blown operating system and running inside of VM, but it's not. It's a very lightweight process, very easy to maintain, very quick to run, very quick to start, and it's scalable as well. So let's get into the installation of it. So the installation on Mac and Windows is pretty simple. We just have to go to this link, and it recognizes what platform we are using on our system, and we can just download it from here. And it's just simple one-click next installation. So I've included the screenshots as well just to walk you through. And there's also one site which I came across where you don't have to create any new environment, where you don't have to install anything. It comes with all of the pre-installations, and you can spin up as many machines you want. It gives you a playtime of 4 hours. It's called Play with Docker. Just try to open it and show it to you. So labs.play with Docker. If you just yeah. And please do let me know if I'm going too fast, or if you have any questions, just feel free to stop me. Okay. So if you see at the top, we have a timer. So you get 4 hours of playtime here. You can add as many instances you want. So this is a new Docker instance here. You see everything is already pre-installed here, and you can add as many machines you want. You can play with it. See, already installed. And you can also host anything inside it. You can try to open a port as well if you want to expose something and test it out. And this is the, if you want to take a SSH session on this particular instance from any other location other than the site, you're always welcome. You can, there is an option. You can just copy it and do an SSH to it. So I really liked it. It's just very quick and helps you a lot in learning. While you're learning, yeah, it's a good thing to have. All right, let's move on. So once you are done with the installation, in your system tray, you will see this tiny whale-like icon. It shows that your Docker is running. It comes in your system tray. And when you right-click on it, you will get a menu like this. So when you use Docker Desktop, it gives you two options. You can run Linux containers and you can run Windows containers on your desktop. But you will have to switch between both of these. I'll try to explain what is the key difference between these and why the switch is required. We'll discuss more about it when we discuss the theory and architecture of Docker. But yeah, if you see here, there is a switch here, switch to Windows containers. So if I switch to this, I will be able to host Windows containers on my machine. And if I switch it to Linux, it will prepare my machine to host Linux containers. But both of these cannot be running at the same time.
All right. So if someone has any questions so far, please feel free to ask. I'll just go on. So yeah, what are containers? So as I mentioned, containerization can be defined as a virtualization at the operating system level to allow deploying and running of distributed applications without the need for entire virtual machines per application. Like you don't need a full-blown VM. Uh, this is economical in terms of computing resources, like since multiple isolated applications can run on a single host. Uh, and and each container has its own file system, has its own process ID, user IDs, network interfaces. And suppose there are 10 containers running on a single machine. The container one will not know what's going on inside another container. They are completely isolated. And they are really lightweight and scalable as well. So there's something called as Docker Swarm, which is not being covered in the session since it's a getting started session. But yeah, that's that's something which provides us scalable solutions. Now, Docker images. So what are images? So image is a software package that includes the source code and all the required dependencies of the software to run. Like, and not just the application and its dependencies. It also has the entire environment as well. Like, uh, suppose if you look at any package in a general word, suppose if I compile a .NET application, I'll get some package if I try to package it, a zip file. But that just has that application code and its dependencies. What about the environment where it is running? Very often you would have heard about the problem. It works on my machine. So that's the general problem of the software world. Like it always works on the developer's machine, but yeah, whenever you try to deploy it on the next machine or next environment, it doesn't work. And the excuse you get is, yeah, it works on my machine. So Docker exactly solves that problem. It packages the environment as well along with it, in which the application is supposed to run. So let's let's get a bit look and feel about how it looks like. All right. So currently, if you see, we are on our Windows prompt, and we will try to spin up a simple container. So if you would have noticed, the prompt of my console has changed now. It looks very much Linux-like. So we are inside a Ubuntu machine. If you see, ls should work here now. You see. Now, to begin with, to do any installations. Now, this is a very vanilla flavor of any container. So when you try to create any environment, any container environment, you will have to decide on the base image. So now suppose I decided that, okay, Linux is the base image I'm going with. You could also go with that. So you could go with any flavor of Linux. You could pick up Ubuntu, you could go with CentOS or Alpine Linux, Debian, whatever you want. You could go with Windows OS as well. You could go for, there is Nano Server, there is Windows Server Pro. You can use those images as a base image. Now that gives us a kernel to work with. And on top of that, we will add our application code and all of the dependencies my application needs to run, and then package it. That's the image. Now this same image can be used to create a number of containers. So as we see here, I just gave the simple command docker run. IT means interactive, so that I could get this prompt immediately. I gave the interactive tag here. I told it that, okay, I want a Ubuntu container to be spun up. So now it created a new container. Let me just pull up a new command prompt so that we can look at it. If you see, this is the container which is currently running.
It was just created about a minute ago, and this is the container ID. This was the image which was used to create this container. And on this prompt, we are already inside that container. Now I can do whatever I want inside this container. Like I will just try to run the update command and try to install something on this. That image name, is it like part of Docker or you had to download it? The Ubuntu? So this is a standard image. Gotcha. Okay. And there are several standard images which are already available. And if you try to use that image, if it is available locally, it will just create a container out of it. If the image is not available locally, it will try to fetch it from the repository. Now, if you would have used NuGet repositories or any kind of repository in general, uh, like a Maven feed or anything, so it's the similar concept here, where we have a centralized repository, and under that we host all of these images. And when you try to create a container out of any image, if it is available on your local system, it will very much use that same image. And if not, it will try to pull that image from the repository, the default repository. We will get into the repositories as well. Now, if you see the update is ran fine on this Linux box, and I can install Git if I want, or any other software. So this is Linux running on my Windows machine. And it was very quick. Like if you want to use a Linux system side by side on your Windows environment, usually you will have to create a dual boot system or you use a Linux subsystem. But yeah, this is one other way if you want to use or test out something very quick. So rather than creating a full-blown VM, you could just create a container which is very quick and test it out. But whenever you create a container using any image, it is very basic kernel. It doesn't have anything installed. You will have to build on top of it, whatever you want. It's just a empty kernel which you get. So I will not have anything on this machine. Whatever I want to use, how I want to use, I'll have to install on it and then get going from there. And this also reduces the size of it. And that's the reason the containers are very, very quick, because the image is very small. You see, I just got the Git as well on this machine. So I can install anything, and it's just running on this machine. So we'll look more at it and know how to package it. We'll learn how to package it in this session. Let's just go ahead with this session for now. So if anyone has any doubts on the images for now, like what in general image means. Right. So there are two ways to create the image. Now, first of all, to create any container, you require an image. Now, to create an image, there are two ways. There is an interactive way and there is a Docker file way. Now, in an interactive way, uh, we take the base image, we spin a container out of it, we do all of the installations, and then commit it, and then create a container, then create an image out of that running container.
So we will look at it now, and then we will look at the other method as well. How do we create it via Docker file? And we will try to understand what Docker file is, how it looks like. Right. So as we saw, we spinned up a Ubuntu container here. We needed Git inside it, suppose, and we installed it. Now, what if I want to create an image out of it? So that every time I create a container out of a new image, Git will already be installed on it. I don't have to install it again. So let's just try to create an image from this running container. Docker ps is the command to list all of the running containers. And to create an image, we will use a commit command. Docker commit, and then the container name. So this is the name of my container. And whatever name we want to give to our image, let's say Git image. All right. It created an image. It gave the SHA ID of that. Let's look at the images. Docker image. So this was the image which we just created. Now, if I want to create a container out of it, it will already have the installations which I already did, and I can share this image across. Other people can also use it. So to share this image, right now this image resides on my local system. What if someone else wants to use the same image which I created, so that they could save time? To share this image, we use Docker registries. So registries are home for Docker images. It's the place where all of these images live. Now, under Docker registries, we create repositories, and each repository represents to a single image. Now, let's first understand, let's just see that the image which we just created, does it have all of the things which we uh, put in earlier in the container? So let's create a container out of this Git image which we just created and see if it already has the Git inside it. All right. So we are inside a new container. So if we open a new prompt now, let's just get rid of this prompt. So currently I have two containers running on my machine. One was the older container, which I created earlier and installed Git on, and I just created a new container from the image which I created. If I do Docker ps, I should see two containers running. All right. These are the two containers. This was the older one where we created a container out of Ubuntu image, a vanilla kernel. And then on top of it, we installed something, we created a new image, and from that image, we created a new container. So now we are inside this particular container here, and we want to see if Git is already installed here. Let's see. We have it. So yeah, this was one way to create an image. This was a interactive way. Now we will take a look at how we create an image through a Docker file. But before that, we want to understand what Docker file is, how it looks like. I'll just get rid of these prompts now. All right. So Docker file is a manifest file. It just has certain commands which we put in a file, and then we run a build command against this file. And this build command reads this file and interprets, okay, what is written inside it. And based on that,
it will create an image. So this is one. So these are the very common commands which we use in Docker file. And on the right hand side, if you see, this is the example. So what we are telling here is from Ubuntu 18.04. That means take the Ubuntu kernel or Ubuntu image as a base image. And on top of it, run this command, like just run a normal update and upgrade, and then install the nginx and curl on this particular container, and then create a image out of it. So it would be the similar thing if we try to do it interactively. If I had to create a container in an interactive mode, I would just create a container from this Ubuntu image, log into it, and then do these installations and then commit. That will create an image. But rather than doing that, we put all of this in a Docker file and then use a Docker build command that will also generate a similar image with all of these pre-installations. That's what Docker file is. It's a manifest file which helps us create the image. Now, before, so how do we use this Docker file? We will towards the end of the session, we will try to containerize a .NET sample app, and that we will do with the help of Docker file. But before we move there, let's just understand what is happening under the hood and what does Docker do. Okay, so before Docker came into existence, the technology was already there in the Linux kernel. So there are two uh, constructs, named as namespaces and control groups. So what namespaces allow us to do is it allows us to achieve isolation, run any process in a complete isolation. So suppose if Docker was not there, still people would be able to do it, but they will have to know the kernel programming, and that would be a lot tougher, and there would be a steep learning curve. So just to avoid that and just to make it easy and simple, Docker exists, and it uses the namespaces and control groups under the hood to give this isolation which we want for each of our application. To run these containers in an isolation, it makes use of namespaces. But what if we ran, suppose 10 containers and they're running in isolation, or 10 processes which are running in isolation? What about if any of the process crashes or something happens inside it and it just starts consuming a lot of resources uh, and generating a scarcity on the system, like no other process is able to get any of the resources? So that's where control groups come in. Control groups allow us to put a limit on any process based on CPU, based on memory, based on disk IO, network, and so on. Like these are the two major constructs which are responsible for this container technology. So if you don't want to use container, you will have to know kernel programming and make use of these two constructs to achieve the similar thing. Okay, so when containers were created, they were initially created on the Linux systems, and for a long time, like almost 4 to 5 initial years, there were no containers for Windows. It was only a Linux thing. And that was because the way initial uh, container daemons were designed, or the container runtime was designed. So the shell from where I was running all of the commands, let me just bring it again. So this shell, this is the client from where all of these commands are being passed. Now this, as soon as I pass any command here, uh, it creates a API request, and that is listened by this daemon, which is always running on the background. Now this daemon interprets what was written or what was passed from the client via the API request, and based on that, it creates or destroys or
does whatever you want to after interpreting the command. Now, suppose I gave a command to create a new container. So I will initiate a command from my client. It will go to a daemon, and daemon has a containerd process which is continuously running and monitoring all of the containers on the system. Now, as soon as this daemon receives a command to create a new container, it talks to containerd. Now, containerd creates a new runc process. This is all on a Linux system. There is no runc process on a Windows. So it creates a runc process. It's a short-lived process. It just comes into existence just to create a container. And after a container is created, this runc process gets destroyed and the container lives on. And this container is then further managed by this containerd. So whatever queries or whatever operations I want to do further on this container, these will be managed by this containerd. So suppose I created 10 containers, all of these containers would be talking to my containerd. Now, this isolation, like these containers are running. This containerd is responsible to control and manage all of these containers. Now, during this, if I want to upgrade my Docker daemon, I can do that. This Docker daemon can go offline, but still this containerd process would keep on running. It will still manage all of these containers which are running. That's how it is designed. Like if you want to do a upgrade in a live environment, it won't hamper on any of the containers. They will still keep on running. Now, if you want to destroy any of the container, if you want to kill any of the container process, it's the similar way. Like we initiate a command from our shell, the client, it goes to daemon talks to containerd, and then containerd just kills that particular container. Now, when we talk about Windows doesn't have anything like containerd or runc process. So when you initiate a command on a Linux, it does all of this stuff. It creates a containerd, but there is no containerd. There is a special layer of compute services which was developed here. Now, why this was required? Because as I told earlier, when containers were created on a Linux system, they majorly use these two constructs, the C groups and the namespaces. Now, namespace do exist in Windows world as well, but C groups don't. There is a different terminology. I think it's system objects through which I do not recall the exact name, but I think system objects or sys objects. Through that, we apply the control on all of the process to control the resources. Now, to achieve all of that, a new compute services layer was developed, which does all of this stuff, which a containerd and runc and are doing. So internally, these internally the working of Linux container and a Windows container differs. But if you talk about the look and feel, how a user would see it, it doesn't differ at all. The look and feel is exact same. If I have, and there is no difference in the commands as well. If I just go to a Windows command prompt and try to run the same commands, it would still create the similar containers. It will do all of the same stuff, but under the hood, the working is a bit different because the layers which we had are different and the technology used inside is different. Now, and this architectural difference between Linux and Windows containers or the Linux and Windows Docker engine. This is the main reason why we have to switch between the container runtime environment. I can just try to show it to you how it looks like. So if you see in the system tray, there is this tiny icon, whale-like icon, which is running continuously. If I right click it, you see here, it says that switch to Windows containers. So far I was running the Linux containers. Whatever stuff I did till now, all of the commands which I passed were for the Linux containers. If I switch it back to Windows containers, and if I try to pass on the same commands, it will not work. Why? Because I was using a Ubuntu image, and Ubuntu image will not be supported while
I've configured my runtime environment to run only Windows containers. So if I try to pass the similar command, let me just switch over my screen again. You see, it doesn't even show the images which were there earlier. So last time when I ran the Docker images command, we were able to see the Git image which we created. It doesn't exist here now because it has changed the entire environment. And if I try to spin the Ubuntu container, it would give problems now. You see, it doesn't run the same command which I ran for creating a Ubuntu container on my Linux environment. Like when I configured my Windows machine to host the Linux containers. All right, so let's just get further. So this is the basic difference in the architecture, and that's the reason why we have to switch over when we try to run containers on our Windows machine. Right, Docker registries. So as I mentioned earlier, Docker registries are the home for Docker images. And Docker images are required to create the containers. Basically, images are the blueprint based on which runtime container would be created. So image is a build time construct and container is a runtime construct. Now, to host these images, so the image which I create is residing on my local system. Now, to share this image and to host this image, we will require Docker registry. So there are many registry offerings. One of the offering is from Docker Hub. That's the default Docker registry which comes with Docker. But we also have a Azure Container Registry, and we have certain on-premise registry options as well, like Nexus and Artifactory. These also allow to host the Docker images. So this is the Docker Hub site. You will have to just create an account on it. Now, under a Docker Hub, you will have a registry. Each registry has a repositories. So there can be n number of repositories, and each repository uh, is associated to a single type of image. So every time you push a new version of an image, it gets piled up on the same repository. Just you will have multiple versions of it. And similarly, you have Azure Container Registries as well. Let me just bring it up. Uh, these are this is the Azure Container Registries, and Doc123 is one of the container registry which I created. Now this registry will have repositories inside it. Now each repo so these are the two repositories which I have for two of my applications. So each of these repositories will have multiple images hosted inside it. So each time I push a new version of an image, it just gets created. So these are the tags for each of the image. So this is how these are organized. Right? Let's keep moving. So yeah, a fully qualified URI for any Docker image looks something like this. You will have a registry, then a repository, and then the image along with the tag. So here the registry name is Docker.io, repository name is Redis, and this is the tag name.
So here, if we see this screen, this is the tag 127.118.117. So if I try to create a similar URI for my Azure container registry, so it would be, let's go to doc123. If you see, this is the login server. So this would come here as a registry. Then we give the repo name. So if you go to repositories, this was my repository name. And towards the last, we will give the tag. This one. All right. So we are towards the end of our session. We will now try to create a sample.NET app and try to create containerize it and then run it inside a container. All right. So for this, we will need a Visual Studio, which we already have here. So let's just create a fresh project. We'll take this ASP.NET Web application. Let me just name it. Create it. So we'll select the type of app as MVC. Right. So we have our app here. This is the solution which we just created. Let's just try to run it first locally from the Visual Studio. So right. So our app is functional from Visual Studio. Now, what we want to do is we will compile this application from a command line using MS Build and have the deployable files or deployable package at some location. And after that, we will write a Docker file and use that Docker file to create an image for this application. And then use that image to create a container out of it and then try to browse it. So let's get a command prompt first. Choose command line, developer command prompt. Okay, so we have it here. So we are running MS Build on Docker app.sln. So we will pass the required parameters which we want.
So let me just try to explain each of these parameters. So this is one of the main parameter which we are trying to give here, publish URL. This means whatever files which we are trying to publish as part of this MS build, these will be directed at this particular location, which is web output at this current location itself. The folder is not there currently, but it will be created as part of this build. Now, web publish method, we're trying to tell it that, okay, we will try to publish it on the file system itself. So let's just run it and see how it behaves. All right, so build was successful. Let's just see if the folder was created. Okay, we have web output. Okay, we have a content inside it. So this is the deployable content. If I just go to any IIS default site and paste this under the www folder, this would start being hosted. Like it, you will be able to browse it. So now we have our compiled code. We have our final package which we want to deploy it inside a container. We will create an image for this particular content which we just created. So let's go back to our Visual Studio. Let me first add this app to our source control. All right, so this is the Docker app. So we'll create a Docker file here under the same directory. So this is the content which we have inside our Docker file. Now, let me just try to explain each of these, what they mean. So this first step, we see from mcr.microsoft.com.net framework, ASP.NET 4.8. So the application which we are trying to build, the Docker app which we just created, this is a ASP.NET application, and it requires a ASP.NET runtime environment. Now, using this from tag here, from in a Docker file, we are trying to describe a base image here. What is the base image that I should use? If you remember from a little while ago, when we were trying to create an image which should have a Git inside it, I took a base image as a Ubuntu. Now here we are taking a base image which already has certain softwares installed on it. So this ASP.NET image, the tag is 4.8. It's tagged as 4.8. This is the name of the image. Yes, ASP.NET. It already has the Windows operating system. It already has the ASP.NET 4.8 installed on it. And also it has the IIS running on it. So I don't have to do any installations there. I just want to move my code to this particular image. So we took this image as a base image, and on top of this image, we're trying to clean up the root directory. So for that, we have used a PowerShell command. So to invoke any command inside an image, we use this run command. Now, this is a simple PowerShell script, remove item because, and we are trying to clean up this directory. Now, we are setting a working directory as this inetpub www root, and we are copying whatever code we have in our local to this current directory. Now, what is the current directory? This is our current directory since we set it here. So when this command is executed, it will copy all of the uh, package files which were dropped at this location when we did our MS build, and it will put it here inside this location. Let's just save it and try to do a Docker build and see how it looks.
file. I think I created the wrong location. Let me just create it again. Let's add items to this folder. So see, okay, here is the file. So it is not a text file, so we should remove this .text extension. Now this looks good. Okay, let's go back to our prompt. Let's see if we have this Docker file here as well. Yeah, so there it is. So let's just try to build it now. So to build an image from a Docker file, the command is Docker image build and whatever tag we want to give it. So let's just say MVC app and in which context we want to build it. The build is started. It's taking some time. If you notice here, it is showing the different stages. This is step 1, this is step 2, step 3, and step 4. And these are the exact steps which we gave inside our Docker file. If I open this, so this is the first step, pulling the image, ASP.NET 4.8 image. Now, if we see here, it is trying to get that image, but it was very fast because this image already resides on my local. I just pulled it before the session started so that we save some time. So this image was already on my system. It took this image. It ran the same PowerShell command, which we talked about to clean up the directory. Here it is setting the current working directory. And this is where it copied the output. Now let's try to create a container out of this. So the command would be Docker container run. We want to run it in a detached mode, so -d. We will name this, let's say Docker app, and we want to run it on so -p, we pass it to do the port mappings. So whenever a Docker container runs, it has its own network interface, it has its own file system, everything inside it. Now, when I create a container out of this image, it will already have a IIS running inside it. And that IIS inside that container, it is running on a port 80. Now, how do I access this port 80 inside a container from my host machine? So there is a way. Whenever we try to run a container, we try to do a port mapping. So by -p 80 colon 80, what I mean here is port 80 inside a container resembles 8080 on my host machine.
So these two are mapped now. So whenever I try to browse port 8080 on my host machine, it will talk to container and try to get the content from port 80 inside the container. Let's just run it and see. Oh yeah, one important thing, we forgot to specify our image name. Our image name was, what did we give here? MVC app. Let's just run. Okay, so port 8080 is I think already in use. Let me just okay, Docker app is already in use by another container. Let me just rename it. Okay, so there we have it. So this is the container ID which was just thrown out of the console. So if I try to browse port 8090 on my local, it should bring up the same environment or same app which we just developed on our Visual Studio. So let's just try to browse it. There we have it. So this is running from inside a container. If you try to see what container is that, then Docker, yes. So this was the name of my last container which I gave, my app. And this is the mapping which it shows here. Port 80 inside the container, 8090 on my machine. Yeah, that was all which I wanted to cover in this session.